अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। जो किस शान से पूरा फरमाया है, हमारे वहम और गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे इतनी जल्दी हमें और इतनी आसानी से हमें एक निज़ाम मुयस्सर आ जाएगा जिसके ज़रिए से हम दुनिया के किनारों तक पहुंच जाएंगे। तो ये दुआएं थीं जिनको अल्लाह ताला ने कबूलियत का शर्फ़ अता फरमाया और आज हम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। Truth finds its way. It traverses the winds, the oceans, over shores unknown, to the very corners of this earth. We're taking you to a land, thousands of miles away from anywhere, a place that found the truth and snatched it from the skies, the islands of Mayotte, where the truth of Islam Ahmadiyyat entered the hearts only through stumbling upon the MTA channel. Nous, on est devenus des Ahmadis à partir de la télévision, de la MTA, et que nous, à partir de ces enseignements, on a constaté qu'ils étaient les bons enseignements qu'il fallait suivre. On est alhamdoulilah, on est devenus des Ahmadis. A Jemaah that established itself long before missionaries ever came. Je suis convaincu que personne ni aucune force de ce monde ne pourra arrêter l'avancée ou la victoire de ces Jemaah. Lost all for the sake of their faith, yet remained ever determined. Tafike mwana jawa rengiz menasi mana kavili hamana shoni de ajane menasi mani karparu hana marisi swali vabo tini wasujur komule nyumba toma ka wasta bitso koinsi. हमें कोई डर नहीं है सदियों से देते आ रहे हैं ये लोग हमारे कुफर के फतवे हमारे कत्ल के फतवे लेकिन हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला Si mon père il n'arrête pas ces trucs je joue devant Dieu je vais couper sa tête et j'avais pas peur j'étais vraiment strict là-dessus. MTA has been reaching the corners of the earth for 25 years. Let us now take you to one of these corners. To find Mayotte, you'll have to look hard. To reach this island 5 times smaller than London, you need to travel across Africa and venture into the ocean. And near the northwestern tip of Madagascar, you'll find the islands of Mayotte. In fact, it's a department of France, the furthest most European territory. You'll find a few French nationals here, but mostly you'll find the native Maori people that settled here from East Africa. But our focus is not on the capital city, but on the village of Majikavo. दिल दे के हमने उनकी मोहब्बत को पा लिया बेकार चीज दे के दुरे बेबहा लिया. These dirt roads and steel shacks are what housed the first converts to Islam Ahmadiyyat. मोहब्बत को पा लिया बेकार चीज दे के दुरे बेबहा लिया. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc sija lor mkuru bisheni da gonhangu tamva walimpavi. Bismillah tafadhalu. Mkaribu sengile tarwani ubanano wana alwene famille. Inshallah. Donc nimbangu devani wande bano ni shio. Takonde aronglo shaima. Aronglo ubeni rutuba na umana mtiti aronglo nasira. Wanakomba dinam dédié fils sabilillah. Ok, avant, on a Abdourakib, un des deuxièmes, mais Abdourakib, Mariama, un de la première, Wahana,
na amatul wadud kama na harma telefon huko alhamdulillah suketi harma isalin mani urjongali ya sheni tukufu ya MTA ya Ahmadiyya. Ustad Zaidu found Ahmadiyyat in 2009. Alhamdulillah rabbil alamin inku senyi sizahunu lawana na utukufu ikamade wan para harma wahayat wangu lana na MTA itukufu sheni tukufu ya jamaa ini kamade ne para tayabuz za harma wahayat wangu ولنا نزي أحوالي كمدي رك هرمس مدام تسك هرما الجماعة يا مسلفية يعني بعد يا جماعة تبليغ التواصل اللغوي تسبرو كم لرنا ما يزي حقي هرما يشيني تكوف مرديني ناس برنامجي كم زو فريما تكوفو زنزانورو يجعل كم حياتو عنو رانغو دعون هانغو التحرم ماشي عنو نوانا عنو توبر اللغوي ما فكرانغو يبوزو أم بتصير هاي نمني كم بدي نكا يقبل يبغى. Maybe it will mean something else. In another situation, it will mean something else. And maybe that has created the problems. Maulana Osama Joya is a recent graduate of Jemaah Ahmadiyya UK. Along with his wife and 7-month-old child, Osama was stationed by Hazrat Khalifatul Masih in Mayotte. Alhamdulillah, Allah Ta'ala की फजल से जो मायोट आइलैंड है वो वहाँ पे सबसे पहले जो अहमदियत का पैगाम है वो MTA के ज़रिए फैला और सबसे पहले यहाँ पे एक साहिब जो हैं वो उनका नाम है इमाम सईदू जिन्होंने सबसे पहले MTA के ज़रिए यहाँ पे जमात अहमदिया में शामिल होने की तौफीक पाई. You're looking at the very first convert to Islam, Ahmadiyyat, in Mayotte. Once he found Ahmadiyyat, he never let go, even when his home, family, madrasa and life were threatened, threats that were acted upon. Yet Ustad Zaidu stood firm. Yangu wakati kama de wanaya wa rukumulia inyumba horaka ho ri kana mkabala mshashi kama utekeliza swala mana rakawa watu washashi donc mlongo rao déplacer ho do no juste rono izi alama harma mkabala suha yarima ata la kumuha donc vraiment suhalini mlongo waka ndani manu kadu wala kuru waka ndani juste urendeni ubulamba mtauto jwa ngie moho neka harma wakati wa magharibi. The door to his house was hacked down with an axe while he had an 8-month-old child. Ustad escaped with his family and now lives in this makeshift steel shack, all because he refused to give in to fear and turn his back on the truth. Nyumba na Jehova bandi za toli zaka za tuho rizi deplacer jana zohona huwa madrasa modern au tekeleza zi ibada tukufuza tuharma mkabala modern alhamdulillah rabbil alamin. कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरआन सुनाता है कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है कभी क्या इस तरह हुआ कि एक दफ़ा उनके एक बहुत करीबी दोस्त जो कि डिश लगाने का काम करते हैं और उनके पास आए उनसे कहते हैं कि आपको पता है कि एक चैनल है जो हमेशा इस्लाम की बातें करता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके घर वो आके चैनल लगा देता हूँ. نقول موزيز كاز خطبة زا خليفة أيده الله تعالى بنصر العزيز وكان عرما برنامج الحوار المباشر دونكو برنامج زنبل نبل راكو سيفي دونكو من فافو لبان داتا الحمد لله نجانا ديكوفري إي جامعة توكوف موردين يا أحمدية نجانا انتريسينا ولا درس موديز بس يسكي هانرا نهونا درس موديز زو إنشانجي زا كبيس نقول مسألة هانا كل جدي سو كما comment ça se fait amba درس زيننا علمنا خير مود زين زباب نكما maulama او कासिज लगो उसके बाद जो है मुख्तलिफ लोग जो उनके पास तजवीद सीखने के लिए आया करते थे उनको वो आहिस्ता इस कम्युनिटी जमात के मुतालिक बताने लगे कि आपको पता है कि एक नई जमात है जिनका मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं बाकी अंबिया की तरह और उसके लिए वो चंद दलाइल पेश करते हैं जो मेरी समझ में तो आ गए हैं. क्या आप लोग इन बातों को मानने के लिए तैयार हो या आप लोग क्या कहते हो इस बारे में? J'avais peur que le jour du Jemaah dernier, je suis un Jemaah, Allah va dire que pourquoi tu as suivi cette Jemaah alors qu'on t'a donné une intelligence
de suivre cette de comprendre. Comme ça, il va nous raconter, comme ça, il va dire comment il a su, comme ça, il va nous dire si on veut bien la vérité, de prier, de faire 2 rakas. Et que nous, on a dit que ouais, ça c'est bien parce que c'est pas la force, c'est pas le contraire de faire entrer une personne dans une vérité quelconque, même si c'était dans des trucs, il ne faut pas faire par la force. Du coup, Stade nous a raconté, du coup, chaque personne qui avait la mentalité de comprendre, de réfléchir, il allait réfléchir. Notre cher Moualim Zaidou, il m'a dit que au lieu de te frustrer ou de t'angoisser, il y a une seule chose que tu dois faire. Comme ça, tu peux être tranquille. Donc, il m'a dit, tu vas faire 2 prières de istikhara. Tu fais 2 rakas de istikhara et tu demandes à Allah ce que tu veux en fait. Je demande à Allah ce que je veux concernant la Jemaah. Kakori soma intongo yurasa be raisoma tartilawa akorambia mbane rikejula otoa dua be ana recherche za ukamana futwa izintongozo tajua mba kweli mtu wajide ambaye imama dizo kweli. Basi akorambia makalima yai raifanya hizi dua za mbali na mbali hata finalement ajarambia mba bon mtu ule ni wae mana ulawana na dalili za kahintiwa azvenwa na ntongozo mazazi hiji. और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मायोट आइलैंड में जिन लोगों ने सबसे पहले बैत की थी उनकी तादाद 35 के करीब थी और अब अल्लाह ताला की फजल से मायोट आइलैंड में तकरीबन 117 के करीब जो है वो तादाद पहुंच चुकी है और ये सब एमटी की बरकत की वजह से हुआ है. Having spent most of his life in Europe, moving to a third world island like Mayotte can be quite daunting. All food has to be imported from abroad. In fact, many supplies for his house and baby for the next few months were brought over by our documentary team. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एशियन पाकिस्तानी लोग खाते हैं जो कि यहाँ पे नहीं मिलती, जिसमें बेसिक चीज़ें जिसका जिक्र कर लिया जाए कि आटा जो है वो नहीं मिलता, सब्जियाँ नहीं मिलती. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सब्ज़ी एक दिन आती है और फिर अगले कई हफ्तों तक वो सब्ज़ी वापस नहीं आती. Mauzoza sere modale rejo kama haruma maori yetu ambapo vira paka mtu vira moja sofia. Fatwas or religious decrees have been issued for Maulana Osama's and Ustad Zaidu's death from the Salafi mosque only 50 yards away from where they live. But this hasn't deterred Osama in any way. Over the past year, Maulana Osama has become a friend to all the non-Ahmadi Muslims in the neighborhood, which goes to show that the hate Jamaat is facing is not from the regular Muslim, but from the mullahs instead. यहाँ पे जो है वो अहमदियों की मस्जिद के पास गैर अहमदियों की मस्जिद है, वो बिल्कुल सामने है और हमारे कुफर के फतवे वहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमें कोई डर नहीं है. सदियों से देते आ रहे हैं ये लोग हमारे कुफर के फतवे, हमारे कतर के फतवे, लेकिन हमें किसी चीज़ का डर नहीं है और हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला. Donc modale monoizi ahwali unavyotirvirao ni kwamba hunu usiku hai sifa ya Dubai wa makomersa na mtabala mbali. मायोट आइलैंड का ये वो इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर अहमदी आबादी पाई जाती है और सारे जो हैं उनके घर यहीं पर हैं, गरीब है ज़्यादातर लोग. इस हिस्से का नाम है माजी काबो का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे पानी नहीं होता. अभी हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जो हमारा एक ही अकलौता नमाज सेंटर है जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें हासिल हुआ है. बड़ी मुश्किलों और जिद्दोजहद से ये जगह मिली है और बहुत ही छोटा कमरा है. No landlord would agree to give Jamaat a place for worship after they'd hear the hate preaching from the Salafi mullahs, until the Jamaat found this small room. तो मैंने उससे कहा कि आपको गैरज जमात लोग जो हैं वो
कुछ कहते नहीं हैं कि आपने अहमदियों को यहाँ पे जगह दी हुई है, तो वो कहते हैं कि मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं ख़ुद तो नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को अपने घर का वो हिस्सा दिया है जो यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये इस घर का नीचे वाला हिस्सा है। Hawengi alhamdulillah, donc wasu jotawaza hon au watu jofanya wudu na haru mkabala mordon joingia jotekeleza ya ibada tukufu yetu. ये वो कमरा है जहाँ पे अल्लाह ताला के फजल से हम इस वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज सेंटर है, बड़ा ही नाखस्ता हालत में था। तो ये इस हिस्से का बाहर वाला हिस्सा है। इस कमरे का मालिक से बात कर रहे हैं कि अगर हमें वो यही हिस्सा भी दे दे। यहाँ से बाज़ औक़ात मैं आ जाता हूँ और यहाँ का नज़ारा देखता हूँ। फजर के बाद बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे खड़े होने का, जब सूरज यहाँ से निकल रहा होता है। बाज़ औक़ात मैं अपने दोस्तों को भी, जो जामिया के दोस्त हैं जो मुरब्बियान बन चुके हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको बाज़ औक़ात मैं यहाँ की तस्वीर भेजता हूँ, कहता हूँ कि ये देखो मेरी जो हमारा नमाज सेंटर है वो एक ऐसी जगह पे है जिसके बिल्कुल सामने जो है वो समंदर है और बहुत प्यारा नज़ारा नज़र आता है। मैं मांगने गया था कोई उनकी यादगार। This is the Jemaah of Mayot, now more than 100 strong. Most Ahmadis are immigrants from Comoros Islands and come from impoverished backgrounds. Most live in steel shacks without electricity or running water, but their strong faith and belief makes them richer than most. Maulana Osama has a gigantic task ahead of him. This is a very young Jemaat and the Tarbiyat process has only just started. They don't even have auxiliary organizations like Ansar or Khudam yet, and only recently have they established a Jemaat administrative body after training from Maulana Osama. Regular dars and Q&A sessions are held all evenings to encourage learning. Sasa harma nyumba ya moja miongoni mwa wanazoni kwamba harma umando dwahanda miongoni mwa awali na warindani wa ngia hali jema tukufu wa Mungu. Sasa uzwala hali jina la nyumba hii ndio hii kwa au kwa wasale sana wale mzondo ku sala rendera muone inshallah lirfanya. Verrons. On va passer par ici. Salam alaikum. Akor balala. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah fik. Doko de miftahu miongoni mwa watu wa amani alhamdulillah wangia harma Jemaah tukufu ya Ahmadiyya iko madi wetu kuza safiki atujajari les pièces tungoze bana mlajije. Ouais, ici c'est ma maison. Voilà, c'est après que je suis devenu Ahmadi que par la grâce d'Allah, j'ai eu cette maison. J'ai eu aussi une femme. Mais malheureusement, ma télévision ne fonctionne pas. Et là, actuellement, je suis en train de regarder le sermon du calife sur mon ordinateur. Là, on regarde ensemble. Depuis que je suis devenu Ahmadi, là j'ai découvert la réalité de l'islam, la réalité de ma vie en fait. Et télévision MTA, ça a vraiment changé ma vie. Du coup moi je constate que la MTA il fait tout pour moi dans ma vie parce que le calife lui c'est vraiment un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas une personne simple. Parce que moi j'ai constaté que les paroles qu'il donne, ce ne sont pas des paroles d'une personne simple qui sort comme ça. Parce que moi chaque fois quand j'écoute le calife, même les émissions télévision qui se passent sur Horizon Islam Ahmadiyya, sur YouTube de la communauté musulmane Ahmadiyya, chaque fois quand j'écoute, moi je vois comme s'il y a quelqu'un qui ouvre ma foi et il est en train d'emboîter les mots qui sont en train de sortir dans leur bouche. Ilyas is one of the first converts on the island and a close friend of Ustad Zaidu. When Ustad Zaidu wanted to learn more about Ahmadiyyat, it was Ilyas who would go online on his behalf on Jemaat websites and research various books and references.
Ilyas grew up knowing only a very twisted and violent form of Islam. So much so that he was ready to kill his own brother and father if they showed any signs of deviating from the Salafi thought. J'ai commencé par, quand on m'a mis dans cette madrase, la madrase, on va dire salafiste, c'est là qu'on m'apprenait, qu'on m'entraînait, c'est là que j'étudiais, parce que je voulais apprendre la religion, comment était le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se conduisait, comment était l'islam. Vous n'avez pas pensé que ce n'est pas le même islam que le prophète Mohammed l'avait ramené? Là, on ne m'avait pas appris sur ça. Moi, c'était vraiment strict. Vraiment la violence. C'est-à-dire c'est les fondés qui dictaient. Qui dictaient comme ça? Oui, c'est ça. Et moi, je prenais ça. Après, un jour, mon père s'était marié avec une autre femme qui était... Il adorait les djinns. Il adorait les djinns. Après, je suis allé au madras. C'était ma tante. Elle était venue chez moi. Non, j'étais allé chez elle. J'ai descendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'avait pas quelque chose. J'ai dit que si mon père, il n'arrête pas ces trucs, je joue devant Dieu, je le mets un épée sur la gorge, un couteau sur la gorge. Je vais couper sa tête. Et j'avais pas peur, j'étais vraiment strict là-dessus. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il était dur, sévère avec les gens. Et moi j'étais prêt. Et je suis même allé jusqu'à tel point que si par exemple on nous demandait de faire un voyage, aller ailleurs là pour nous faire sacrifice, faire le djihad, j'étais prêt. दुश्मन को जुल्म की बर्ची से Mayotte is a 95% Muslim country, with the majority belonging to the Wahhabi or Salafi sect. It's among these people that Ustad Zaidu started preaching his rediscovered teachings of the true face of Islam. But this, of course, was not received lightly. In this clip, you can see Ustad Zaidu making a futile effort to speak on the topic of the death of Jesus. The hostility he and the Jemaah received soon after from the Salafi mullahs is nothing compared to what you see here. Après, un jour, il y a un ami qui est venu me voir, il m'a demandé, viens, on va aller quelque part, il ne faut pas prendre un seul fondé, que ce soit ça. Il m'a dit, je m'en fous. Il dit, je m'en fous. Je pense que si je vais avec d'autres là, il va m'embrouiller. Non, écoute, viens. Tu vas prendre juste le tajwid. Tu connais que ça, le tajwid. Alors je l'ai suivi. C'est là que je suis allé vraiment de stage la première fois. Et un jour, il nous a appelé, il nous a dit qu'il y a une nouvelle. Il y a une nouvelle, il ne faut pas parler à personne. Il a commencé à nous parler de Jésus. Il a trouvé un disque que Jésus, il y a une Jemaah qui dit que Jésus est mort, il faut regarder cette dalil. C'est là qu'il a commencé à fuir, à nous parler. Mais moi, quand il me parlait là, quand il m'a dit qu'il ne faut pas parler à personne, moi je fais le contraire. Je suis allé sur le site de la Jemaah, j'ai tapé l'islam Ahmadiyya. C'est là qu'il y a le logo qui dit l'islam, la vraie vérité. Je suis entré là-dessus. Un jour, je suis tombé sur le livre du 4e calife, Tawhid. Jusqu'à présent, c'est le calife vraiment, je l'aime beaucoup. Après, j'ai commencé à m'intéresser ce livre. Ce livre était vraiment intéressant. Quand je l'ai lu, le premier livre que j'ai lu, c'était les problèmes des temps modernes. C'était vraiment expliqué. C'était bien. Là, je me disais, comment ça? C'est quoi ça? C'était en français. Il était bien traité et bien clairé tout ça. Et là, je me posais la question, comment ça se fait qu'on me dit ça dans la madrase là-bas, là où j'étais, que l'islam c'est ça, il faut dur comme ça. Et là, je vois une personne qui parle vraiment simple et on voit vraiment la réalité à travers ses paroles, comme si c'est réel. C'est vraiment la vérité. Voilà la vérité. On se sent vraiment comme si
on sent vraiment aussi que le Coran, c'est pas... Parce que là, quand j'étudie là-bas, c'est comme si le Coran était passé. Le Coran était passé parce que... ancien livre. Mais là, on voit comme si le Coran, il y avait l'ancien Coran, le nouveau Coran et le Coran d'après. Le Coran résumait tout ça. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser là-dessus. Après, j'ai commencé à étudier avec Oustad et tout ça, avec les dalils. Quand j'ai commencé à lire les livres du 5e calife aussi concernant le Khilafa, quand il a parlé de Khilafa, j'ai lu vraiment ça, ça m'a vraiment attiré. C'est là que je me suis dit totalement, cette Jemaah est la vraie vérité. Atarparas dalili mwelezo marka tayari na nguvu martushinda afanye deba na wananya mafundo ambali na mbali ili rediscuter mana tsikana vi vraiment amantu apare vérité mordeyo ripartager na wananya maulama yuko mbade waka alhamdulillah de inyengo intention yangu yaka tsakana nzio kamba ni tsitsi chongo modezo befikirangu ikamba la budda shchini ripartager nanyo maana ni haki kama ina dalili harmi qur'ani na harmi sunna wa preuve zenye sizo tongo modezi kamba Isa alayhi salam wa yarnden afu kwa swali mwana bangani juste watu parawara 45 kwa swali mwabo ijima yetu vo baanda wabo jari déplacer lere nyumba ja komula mani kai sababu ya mkabala mordo wajar habilo kamba neka rumparanu kama musallina jamar sujukumu nyumba tuambie kwamba wamtojo Allah subhanahu wa ta'ala dara ambia kama riswali na jamaa aqimu salata fafikiri labudda sir tekelezi swala yetu This is what used to be Ustad Zaidu's house. It was destroyed along with the madrasa where he taught tajweed. It is a testament to the sacrifice of the Ahmadis of Mayot. modali kwamba ravira harma mkabala mordon hunu ravira nzia rono i plasi koma dibano nyumba ikomba dia komula harma i 2012 mon mordo harma elera tongoza hijir la shaka roho yangu ika ya kodiha kabisa kabisa maana rika deja kashiza kabisa kabisa rika huku sijua mantindi ya kujijir mwangu wa kuntoa kabisa beti tawakkalha Allah subhanahu wa ta'ala sikana ifikiri au kamba hali yonti toko haiza alama nazo na au hodari wazo ne nguvu zayo wala taalama moja sikana yazima ya kamba hali yonti toko bora ni fene jamaa renden enembel tere bande ए खुदा दुनिया में कुछ ऐसे भी हैं. Le début, quand on a commencé à faire la Jemaah dans la cuisine de chez vous, on était 4 au début, et quand votre maison était détruite, c'est là que je me suis dit, oh, la Jemaah est foutue, on n'aura nulle part où aller. Les jours où on continuait, et là j'ai entendu que nos adversaires là, ils ont concocté contre nous, ils ont remonté le village contre nous, venaient nous expulser. Là je me suis venu du verset que Allah qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin kathiratin bi'idnillah. Wallahu ma'as sabirin. Il y a beaucoup de salafistes et nous on n'est pas beaucoup. Comment se fait-il que tous les complots qu'ils font échouent par la suite? Là, je ne comprenais pas, vraiment c'est un miracle. Mwanahe mtu baba kusoma pamoja na mwanangu mtumishi harma likolo tafikiri nampar na mtu mwambia assalamu alaikum na jibu alaikum salam mais juste hautsal mayisu kama mtsina problem wala rancune harma umwangu kweli tutongoza hijir maana tsende tatsambia wanazunu kamba wantu wananyatwa basa nika wa tayari. La Jamaat Ahmadiyya à Mayotte, les premiers convertis, nous avons su ces Jamaah à travers cette MTA. Nous, on est devenus des Ahmadis à partir de la télévision, de la MTA. Et que nous, à partir de ces enseignements, qu'on a constaté qu'ils étaient les bons enseignements qu'il fallait suivre. On est alhamdoulilah, on est devenus des Ahmadis.
طيب دوك هارما اي شينيا امتيني يوكي تشوجو يمكنشيا وانتوي اباندوني ابدا مانا تشيني معنا نزيه كما يو ديي نور يتنزيه كما يو مليشيا يعني فانو جيلا كونو كما اسكو بعد متمي محمد صلى الله عليه وسلم عفا او بارا وفاتي لازم رو اسور مليشي كاتوجا رما اباندوني ولا را مليشيا maana chini ungofua tu ufungatia toujours na wewe ufungatia daima na bismillah na bozo ndirangalie MTA तेरे बंदे ए खुदा दुनिया में कुछ. As the sun sets on Mayotte today, the MTA Ahmadis of Mayotte will rise up the next day with stronger convictions and aspirations in their hearts. Je prie, nous prions beaucoup que la Jemaah progresse. La Jemaah normalement est en train de progresser malgré l'hostilité grandissante encore d'un côté, parce que l'hostilité est toujours là. Il y a nos détracteurs à côté, il y a l'opposition, il y a les difficultés qu'on rencontre dans notre vie même. Mais la Jemaah, les membres augmentent. Ya Rab hai tera ihsan. Kwamba de mamula watosta toa espanhol, zilongoma Suria, biatongo moja kwamba tilimena Allah subhanahu wa ta'ala amumia kwa kila siku tinatoma zaidi. Tinatoma mpaka kawashinu fanya tongo tsoko yensi. Na kule tujoye amri Allah, be wamtsore gyanyuma, wam Ahmadiyya tampaka. Maulana Osama has an enormous task in front of him, taking this brave Jamaat from its current hatchling to a strong, fruitful tree under the guidance of Hazrat Khalifatul Masih. यहाँ पे आके शुरू का एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी जिसे कह लें तकलीफ़ दे इस वे में कहूँगा इस रंग में तकलीफ़ दे था कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आहिस्ता आहिस्ता जब रहना पड़ा और कुछ अर्सा लगा ये समझने में कि मैंने ही संभालनी है चीज़ें और किसी ने बाहर से तो आना नहीं है कि अब ये तो नहीं सकता कि एक खलीफा वक्त ने एक मुरब्बी एक मुल्क के लिए भेजा है और आपको कि नहीं अब कोई और आए जो इस सारे सिस्टम को चलाए तो इस चीज़ को समझने में थोड़ी देर तो लगी थी लेकिन जब समझ आ गई कि मैंने ही ये सारी चीज़ें करनी हैं और अपने आप को एक किस्म का इनका जो कहते हैं ना रूहानी कहते हैं बाप जब समझने लगता है इंसान अपने आप को इस रंग में कि मैंने ही करना है सब कुछ इनको तो कुछ नहीं पता ये तो बिल्कुल जिसे कहते हैं नौमौजूद बच्चे हैं पैदा हुए हैं अभी जमात के लिए तो उनको हर बात सिखाना जमात का इल्म देना और जमाती तकालीफ जितनी भी यहाँ पर हैं उनके साथ मिलकर उनको बर्दाश्त करना तो जब इस चीज़ को समझ आई तो फिर अल्लाह ताला की वजह से अल्लाह ताला ने तौफीक भी दी और हिम्मत ताकत भी दी तो ये एक चीज़ थी जो शुरू में तकलीफ़ दी थी लेकिन अब अल्लाह ताला की वजह से इसमें ऐसा घुल मिल गया हूँ कि ऐसा एहसास नहीं होता कि मैं काफ़ी लोगों से दूर हूँ. Ustad Zaidu is busy day and night turning hearts and minds towards the truth and preparing the next generation, completely carefree of the death fatwas on him. Tamutsarandisi harma izbaraka ranguza maru atawassulanu kama hasbab ya television ndio yoyo nes likati mambeni maduku tu just harma maru ukamba wami mahaba yangu marusonia kama nakuzungu hadi sheni ya. The Jamaat is strong in heart, fearless in front of ignorance. This tiny dot in the Indian Ocean, lost in the big blue, is now a beacon of hope, a beacon of truth, a minaret from which the words of the Lord are shouted, strong and loud, beckoning all to it, once again battling darkness, across the waves and the winds, for the next person in search of the truth. आज कौन सी जमात है जो बहैसियत जमात अल्लाह की तरफ मशरिक़ में भी बुला रही है और मगरिब में भी बुला रही है, शुमाल में भी बुला रही है और जनूब में भी बुला रही है. वो चाहते हैं कि उस नूर के शोले को बुझा दें जो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिल पर नाज़िल हुआ था. वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही,
और ज़रूर खुदा उस नूर को मुकम्मल करेगा। हाँ, मुशरिकीन और कुफ़ार उसको कैसे ही नापसंद करें, ये वो बात है जो ज़रूर होकर रहेगी। बस ये तो तकदीर की बातें हैं।